उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर हिल स्टेशंस में से एक है नैनीताल, and this famous getaway is also called the Lake District of India. That's because the region is dotted with a bunch of lakes, some known and some unknown ones. And one such gem is Sattal, which is actually a cluster of 7 freshwater lakes. These pristine mountain lakes nestled within a dense forest is definitely one of the most stunning places of Uttarakhand. Since Sattal is one of the few pristine and uncontaminated freshwater habitats in India, it acts as a true heaven for both native as well as migratory birds. अब birding के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं, and that's why I tagged along with नीरदेव बनकोटी. अभी तो हम सातल के बैंड एरिया ट्रेल पे हैं. Okay. ये बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है. Everybody who visits सातल do this area at least one time. देखिए सिमेटा बेबलर बोल रहा है. हाँ, एक ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है. And parakeets, these are Himalayan parakeets and slitty-headed parakeets भी बोलते हैं. Red-breasted parakeet भी आजकल यहाँ आई है, काफी बड़ा फ्लॉक आया है. तो ये यहाँ के क्या नेटिव स्पीशीज है? Red-breasted parakeet विंटर में विजिट करती है. Himalayan parakeets तो रेजिडेंट है. वो जो पेड़ है उसके ऊपर बैठ गए हैं. Okay. You can see जिसमें से लाउड बन रहा है. हाँ. Neer is a mountain kid who has travelled extensively all over the western Himalayas, leading numerous birding tours. He also runs a wildlife lodge which specializes in hosting bird watchers from all over the globe. With this kind of experience, I'm sure आज कुछ तो सीखने को मिलेगा. जो ये हमें दिख रहा है, ये सातताल का ही ये सातताल का ही पार्ट है और ये गरुड़ ताल है. अच्छा, ये गरुड़ ताल है, तो उसी का एक्सटेंशन है. हाँ, उसी का एक्सटेंशन है. अंडरग्राउंड तो ये लेक्स कनेक्टेड होंगी. ये वन ऑफ द मोस्ट प्योर लेक है कहना चाहिए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट से सराउंडेड है. पॉल्यूशन बहुत कम है. सातताल की जितनी भी झीलें हैं वो उतनी प्रदूषित नहीं है. थोड़ी बहुत मात्रा में प्रदूषित हैं. बाकी झीलों के मुकाबले तो प्रदूषित ही नहीं है अगर बाकी झीलों से कंपेयर किया जाए. और जैसे सातल कंजर्वेशन क्लब जो सोसाइटी है वो काफ़ी करती है, काफ़ी वर्क करती है और पीपल भी अवेयर हैं, क्योंकि यहाँ तो बर्ड वॉचिंग और नेचर से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस और आपके आउटडोर एक्सकर्शंस वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो दे प्रोवाइड अ कम्युनिटी बेनिफिट. गॉट इट. हम जा पाएंगे? बिल्कुल जाएंगे. अरे सही. या तो जितनी भी नॉलेज यू हैव गेन्ड इन द लास्ट few years, कैसे has it all been self-taught? Mostly self-taught, but when you do the activity, when you do bird watching, like in Sattal, when you do the things, so what happens is आपको खुद ही वो चीज़ें आने लग जाती हैं. लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. फिर आपका इंटरेस्ट रहता है तो आपके दिलचस्पी रहती है. तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती है. White throated laughing thrush उधर है. Yellow knee woodpecker, you see? वह सुबह सुबह डालियों में घूम रहा है और वो क्या करता है, कान भी लगाता है, सेंस भी करता है. तो वो डाली में घूमता है उठपकर ऐसे ऐसे करके और कीड़े ढूंढता है. जहाँ पर कीड़े वीड़े की आवाज़ आए वहाँ पर खोदता है और फिर खाता है. हाँ, पेड़ के ऊपर ब्लैक थ्रोटेड सनबर्ड ही घूम रही है और बहुत ऊपर है. पूरा ब्लैक नजर आ रहा है, बट आप उसे कैसे पहचान सकते हो? आप उसे पहचान सकते हो क्योंकि उसका जो शेप है और जो बिल है वो तिरछी है. तो आप पहचान सकते हो कि ये कोई टिक नहीं है, ये कोई वॉबलर नहीं है, क्योंकि उसके फीचर्स अलग हैं और उसका बिहेवियर भी अलग है. बहुत फ्रीक्वेंट है. बहुत टेक्निकल है यार, बहुत ज़्यादा टेक्निकल. और देखने में ऐसा लगता है बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है. क्या करना है, बर्ड्स दिखती हैं वो बताएंगे, आप देखो. लेकिन अभी तो बाइनोक्यूलर्स में ना तो मेरे को तो पता भी नहीं चलता. जब तक मैं देखना शुरू करता हूँ बर्ड चली गई है और पंछी चुग गया खेत, वैसा वाला सीन है.
But Neer, how did a mountain boy get into birding professionally? वो भी I mean the kind of background we come from generally अभी भी पेरेंट्स को ये लगता है कि यार प्रोफेशन होना चाहिए या तो इंजीनियरिंग या सीए या मेडिकल. देखिए पेरेंट्स को ये लगता है तो उनको बिल्कुल सही लगता है क्योंकि वो उनकी सोच से है. और तब जब पेरेंट्स छोटे थे तब मेरे बराबर थे, जैसे हम बागेश्वर से हैं तो बहुत सारी बर्ड्स आंगन में घूमती थी. कभी जूठा खाने आ रही हैं, कभी इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही हैं, कभी छत में घूम रही है, घर के अंदर ही घूम रही हैं. तो इतना इम्पोर्टेंस बर्ड्स को मिलता नहीं था और ना ही क्योंकि प्रकृति हर जगह थी. अब हम बड़े हो गए, हम शहरों में रहने लगे तो हमें नेचर दिख रहा है, तो हम फैसिनेशन बहुत हो रहा है नेचर से. हो सकता है मैं 50 साल पहले पैदा होता तो मेरा नेचर से इतना जुड़ाव नहीं होता. पर अब जिस तरह का मैं इंसान हूँ तो मुझे अच्छी लगती है प्रकृति. मुझे लगता है मैंने तो दिलचस्पी और चंचलता के उसमें आगे बढ़ते हुए ये चीज़ में एंटर किया और हल्के हल्के वैसा ही नेटवर्क बना. फिर मैंने ये सही समय पे किया. 20 साल पहले अगर मैं यह कर रहा होता तो मुश्किल होता इंटरप्राइज जनरेट करना. आज हर कोई अवेयर है, हर कोई यह करना चाहता है, तो आज आपकी आमदनी भी इससे होती है. For breakfast, Neer took me to his favorite spot in the entire Nainital district, and that place just left me speechless. बस अब मैं क्या ही बोलूं, I let this place do the talking. आप तो अलग ही कुछ जगह ले आए. मैंने इतनी किलर जगह नहीं सोची थी. अच्छी जगह है. क्या है ये? वेयर आर वी अभी? छिपा हुआ खजाना कहाँ से निकाला आपने? ये छिपा हुआ खजाना यहाँ पर गरुड़ताल है. और अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छी झील है हर मायने में. शांत है और जंगल के बीच में है. पानी यहाँ का बहुत अच्छा है. तैरने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं है. अच्छा. हाँ, पर तैरने से ज़्यादा बैठने के लिए, सही बात, बैठने के लिए इससे जगह नहीं है. बहुत लोग आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, घूमते हैं, बर्ड वॉचिंग करते हैं. आउल का एक पेयर, ब्राउन आउल का यहीं पे रहता है. अच्छा. है यार, बहुत ही अलग वाइब है यार. जैसे ही हम एंटर किए वहां से चलते हुए जैसे आ रहे हैं, ओहो, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं इस जगह पे रहता हूँ. सही में यार. If you were to describe life here in this region in a word or in a sentence, कैसे करेंगे? मस्त. बर्डिंग के बाद आई केम बैक टू हील फार्म. यहाँ पिछले कुछ दिन तो बहुत ही पीसफुल रहे, बट आज थोड़ा पसीना बहाने की बारी है. When was the last time that you've ridden one of these electric bicycles or any other bicycle? इलेक्ट्रिक बाइसिकल तो कभी भी नहीं. ठीक है. I've just seen one in Goa, लेकिन कभी नहीं. Cycling last I think a year back. You know, give you a little bit of assistance. If you put the mode of assistance on, so you press the power button, the LED lights up, Right. and you use the plus button to increase the pedal assist. You've got 4 levels of pedal assist in this. Yeah, You can eco to increase- turbo. Yes, eco to turbo, and then you press the minus to in fact switch it off. Okay. Right? In that case, no assist. and it's just human power.
क्वाइट राइड यार. Good fun, bro. मजा आ रहा है. यार राइट. जो पहला स्ट्रेच था ना, उसमें तो मेरे को लगा मैं गिव अप कर देता हूँ. मैंने कहा बस हो गए ये 3 किलोमीटर्स, आई एम डन. बट ठीक है, फिर उसके बाद आई थिंक द ग्रेडियंट वाज मैनेजेबल. और फिर एक्चुअली द फन स्टार्टेड. जा रहे हैं ट्रेल्स में से तो मजा आने लगा. बट मैं शुरू के 20 मिनट में गिव अप करने वाला था. Yeah. है छोटा सा learning curve इसका, but it's a short learning curve. Okay, we've pedaled 10.38 kilometers so far, and average ride time is about 56 minutes, an hour, give or take. So not bad, huh? Yeah. What's your connection with Kumaon region? Yeah. It so happened that during my travels and my journeys, I was, looking for a spot where I could come and retreat myself. So in that moment, when one says, "Here, if something's gonna happen, let it happen. Let's not fight it." That's somewhere that letting go and that acceptance is what really led me and brought me to this area. To this area. And talking about coincidences, in fact, I read somewhere that coincidences are God's way of being anonymous. God's way of being anonymous. वाह, कि गहरी कुछ बात- लिखा था, गहरी बात बोल दी है. कुछ लिखा था, आना था, Yeah. बस फिर रीजंस अपने आप बनते जाते हैं, निकलते जाते हैं. That's why I'm here. Yeah. शायद मेरे से मिलना लिखा था, इसलिए आप 8 साल पहले ही आ गए. डेफिनेटली हम तो 8 साल से वेट कर रहे थे कि एक बाइक राइड पे लेके चलेंगे, इनकी ऐसी हालत करेंगे. इन्होंने बोला था ऊपर चढ़ना, हमने कहा चढ़ जाएंगे. अब लग रहा है ऊपर ही चढ़ जाएंगे. लग गई बाबा. 8 साल से वेट कर रहे थे हम इस समय की. ना चल पा रहे ना चढ़ पा रहे. अब तो बस रेंग के ही जाएंगे. तो इतनी मेहनत के बाद फाइनली वी रीच कुमाऊनी फार्म कैफे. Located on a hilltop, the place offers great mountain views and does a sincere job in retaining some of the lost Pahadi cuisine. कुमाऊनी फार्म कैफे दरअसल हमारे अजीत कामत हमारे सर थे, उनका ड्रीम था. कुमाऊनी फार्म कैफे मतलब कि हम इसी फार्म में ग्रो करेंगे और ऑथेंटिक, एकदम ऑथेंटिक वही ग्रो करके हम अपना लोगों को वही सर्व करेंगे. अब बहुत से लोग ऐसा आते हैं कि मतलब एकदम हाइपर हो जाते हैं, कहाँ बनाया है, यहाँ कोई आता भी है या नहीं भी आता है. अब जब एक बार हम आके टेबल पे बैठ जाए, आप रिलैक्स करिए, आप खाना तो खाइए, उसके बाद फिर हाँ कुछ तो दम है. कद्दू की सब्जी, आपके पीछे कद्दू पड़े हैं. हाँ जी. उसी का बढ़िया. ये सब्जियां सब यहीं के अपना फार्म की है. ठीक है. ये लाई का साग है. लाई का साग. जी. ये गडेरी की सब्जी. गडेरी अरबी का फैमिली का. वाह. ये जो मस्टर्ड ऑयल है, हाँ जी. इसके ऊपर अगर आपको एक्स्ट्रा पंजिंग चाहिए, ओके. ऊपर से ऐड कर सकते हैं. ठीक ये है. दाल है अपना सीमी दाल मोट गया है, तो अपना मिक्स दाल है. ठीक है. ये अपना अमचूर का सब्जी है. अरे यार, खट्टा, this is मीठा, amazing. तीखा इसमें, क्योंकि बीच में कहीं पर लाल मिर्च भी होगा. ये ना ट्रेडिशनली शादियों में बनता है. शादियों में बनता है. अच्छा. क्या कहते हैं, क्या है इसको? अमचूर का सब्जी. अमचूर की सब्जी है. ओके. ऐसे ऊपर चढ़े हैं ना, ये जनाब तो पहले ऊपर चले जाते फिर नीचे आते, हमें देखने. हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? इवेंचुअली वीडियोस मैं बनाने लग गया था. वो चढ़ाई के पूरे एक्सपीरियंस के बाद नाउ इट फील्स वर्थ इट. Doesn't it? On your knees. True, very true.
अब आइडियली इतना खाने के बाद पेट में जगह तो नहीं बचती, बट जब बात हो चॉकलेट्स की तो रेजिस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। कोचुआ is a chocolate company born right here in the Himalayas by two mountain lovers, Sai and Prachi. In their own words, they are on a mission to create some of the most amazing and innovative chocolates through pure and natural ingredients. Yeah, so I've heard of tea factories in the wild in hill stations. I've heard of cheese making unit. Yeah. ये chocolate factory मेरे को पहली बार पता चला है. That too in the mountains, that too in the hills, and that too, I don't know if that's the right term, artisanal chocolates or the kind of varieties that I've read about. Yeah. It's fascinating. लेकिन what's the connect? What's the story? जंगल में ये मंगल कैसे? Yes. ये डायलॉग काट देना. कैसे है मतलब the main reason why we did it is because everything that we do it's all around nature. हम पहाड़ों पे इसीलिए है because हमें पहाड़ ही बहुत पसंद है. Being here it's very important to us. So we wanted to create chocolate within nature, within the mountains, so that people can come and taste the purity of the chocolates. An exceptional flavor that nobody in the world ever makes. There's a way to eat it. Okay. So we start with the dark chocolates. There's the coconut pepper, milk, coffee mocha, gold, rose, kesar. This is the focus. And these are three new things that nobody in the world has tasted. Then there's a coconut pepper, 70%. Coconut and pepper. So it's a vegan dark bar. It's approximately 55 to 60% dark chocolate. And we grind and dry fresh coconuts and then we put in the bar and then we top it with freshly ground pepper. This is slightly on the sweeter side, Yeah. but still very distinct flavor. Yeah. So this is like a sleeper hit for us. जब हमने बनाया था हमें लगा तो people may not like it, but this sells so well for us, so well for us. It's one of our highest sellers, which is the most surprising part, but it does very well. None of our chocolates have more than And zero processed sugar. there's zero processed sugar. There's no processed ingredients at all. So everything is bought raw from a farm and then we make it everything ourselves. Drying जो होती है, कुछ भी roasting अगर करना है, वो सब यहाँ होती है. Yeah. We don't buy anything processed. And all of our ingredients can be traced to the To source. the origin, to the farmer, directly to the farmers. कोई नहीं है बीच में. There's a Kerala, the Idukki Hills 70%. So that's one you should try. And this is the technical name or the brand name? No, this is the origin. So No, all I get that. Yeah. But when you sell, It is Idukki 70%. I love that. Yeah, Yeah, I love because- that. Because that gives you a sense of connect. Where of it to the comes flavor. Exactly, Yes. exactly. That is what Yes. it is. Do you like espresso? Okay, then This yeah. is the one you should have. We keep it separate This and is we always focused. ask We that always ask question. people. So this is an espresso shot in a Not tiny everyone bar. can handle it, ऐसा है? It's Not everyone likes yeah. espresso, na? Yeah, so it's intense. Like It is an espresso intense shot, coffee. clearly. There is It's one of the best coffees in the country. It's also not grainy. Grainy might not be coarse है. हल्का पूरा एकदम सा. हाँ, Yeah. एकदम हल्का smooth भी सा. नहीं है. Yeah. तो actually ऐसा लगता है like your जब espresso shot आप मारते हो तो नीचे जो Yeah. थोड़ा सा बच जाता है ना. हल्का सा. yeah, yeah. That's true. Yeah. Oh. So this has no chocolate. There's no cacao in this. Yeah. And it's just coffee. It's just pure coffee. coffee. Yeah. I think for me the winners would be Yes. I think this one. What this Tamil was Nadu. Kolachi. Yes. Yeah, that's yes. a Kolachi. Kolachi, 100%, Tamil yeah. Nadu. So that's one of our people's favorites. And your upcoming one. Yes. Oh, I'm glad. Okay, Finally, okay. someone is Please, happy. आप लोग बुरा मत मानना. ऐसा नहीं है कि आप मुझे पसंद नहीं मानेंगे. Don't worry. Yeah. Everything about making chocolate starts with this bean. So if you see this bean, this is where everything starts from. This is cocoa bean. This is a cocoa bean. So before, I'll tell you the story of how a cocoa bean comes to be first of all. So this cocoa bean has been roasted, but before that, cocoa bean एक fruit में होता है जो इतना बड़ा होता है, but उसका जो pulp है अंदर it's more like सीताफल. So when you ferment the cocoa pulp with the fruit and then dry it is when you get this bean. तो एक fruit में multiple beans. बहुत, it's like the seed. Seed है वो एक तरह का. Exactly. तो seed आप जब ferment करते हो उसको dry करते हो तब ये मिलता है. Okay. जब वो यहाँ आता है तो the first thing that we do is we sort it. क्योंकि क्या है कि अभी ये beans आप जो देख रहे हो they are absolutely perfect. So Manisha or anyone else who's here they sort the beans कि
फ्लैट बीन्स ना हो, जिसमें जो कीड़े गए वो ना हो, बिकॉज हर एक बीन्स है यहाँ पे कभी कभी इस जो पार्ट है, ये जो एजेस, इसमें होल होता है, दैट मीन्स एक कीड़ा गया है उसके ऊपर, सो वी हैव टू टेक दैट आउट एंड देन वी फाइनली गेट दिस बीन. जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना ज़्यादा पैशनेट होते हैं तो वो आपकी बातों में भी झलकता है. The way Sai was talking about chocolates is a clear indicator that his heart is in the right place. And while he was showing me around his tiny but effective manufacturing unit, Prachi was busy making a yummy cup of hot chocolate. This is indeed the right way to end the day. This happened in 2018. I think this decision was also taken while being in mountains. Wow. Yeah, so I think with Sai, every time he visits mountains, he takes some life-changing decision. He has done that in the past as well, and that's what happened in 2018. He just sort of came and he like spent the first 2 days by himself, and I knew he's working something out in his head. Where was this? This was in Binsar. Binsar, yes. And I think on the second day or third day, I just told her, Prachi, I'm going to make chocolates. Yeah. That's it. Yeah. But were you having chocolate? No, nothing like that. See, food has been an integral part of my life. I have, it's not like I'm a foodie or anything, but I truly, truly love food. I believe food can change the world by a lot of things. I truly watch food videos. I do a lot of things Around food. Yeah, I knew I would be making food. So, coming to mountains at some point in time, we thought that we would do it. Yeah. Now, when would that happen? We did not know. We would keep talking about it back and forth. But I think the pandemic is when things sort of came into perspective, and we both did a little bit of soul searching, questioned the lives that we were leading, and our decision, it was basically a fast forward process for us from then. And moreover, there are a lot of things that we do other than just making chocolate. So like so there is a village called a Seam here. So we do projects with them. So they run a small library a place where children come and study. We are in touch with them and we work with them to train children, to not train children, but teach them a lot of other activities which they would never get in a small village. So one thing that we did was teaching them how to make cookies. Cocoa for me, it's not like a capitalist business here. We always wanted to create which is something more meaningful, which makes a difference, truly makes a difference to this world. Because after 20-30 years when I'm gone, I don't want to leave behind a company which just operates on profit. We really want to create something which truly makes a difference to this world. And the truth is, no sunset, no view is ever the same. Yeah, no it's always different. It's always different. Yeah. You can never say कि ये तो परसों हुआ था या एक साल पहले हुआ था. It's always different. It's so beautiful. Yeah. Time and again, people ask me that why I don't share the exact locations of the places I visit. And as always, my response is the same. UNTRAVEL has never been about checklists and sightseeing spots. Our endeavor is to inspire people through stories and motivate them to find their own special secret hidden gems. कहानियों और scenic जगहों की कोई कमी नहीं है. All we need to do is to spend time in a destination, make some friends and just let the magic happen.